Hi to all. Today we will read about the Panchayat Samiti in Odisha. The Panchayat Samiti is the intermediate tier of the Panchayat Raj system. However, the different state given the different name to the Panchayat Samiti. For example, in Madhya Pradesh it is called Phakapada Panchayat, FACAPADA. Like this, in Assam it is known as Anchalik Panchayat. In Tamil Nadu it is Panchayat Union. In UP it is Kshetra Samitis as the Taluk Panchayat, and in Karnataka as the Taluk Development Board. But the most popular name is the Panchayat Samiti. Next one, area of jurisdiction. In the majority of states, the area of jurisdiction of Panchayat Samiti is the coextensive with the block, which is generally a smaller unity of compared with to the taluk. Number 1. Area of jurisdiction. In some states, the jurisdiction of the intermediate tier is the coextensive with that the taluk. तो पंचायत राज सिस्टम इंटरमीडिएट टियर बा मझी अच्छे पंचायत समिति आ पंचायत समिति को विभिन्न स्टेट रे विभिन्न नाम रे डाकती जेमिति कि हमर मध्य प्रदेश जनपद पंचायत कहा जाए, आसाम रे आंचलिक पंचायत कहा जाए, तमिलनाडु रे पंचायत यूनियन काउंसिल कहा जाए, यूपी रे क्षेत्र समिति कहा जाए। किंतु यार मोस्ट पॉपुलर नेम बा जनप्रिय नाम होची पंचायत समिति। देन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, तार शासन करबा माने तार जुरिस्डिक्शन एरियाटा कौन, तो मैक्सिमम स्टेट मेजॉरिटी स्टेट रे पंचायत समिति एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होची एटा होची गोटे कोएक्सटेंसिव ऑफ द ब्लॉक रो गोटे एक्सटेंसिव माने ब्लॉक रो गोटे एक्सटेंसिव एरिया जोटा कि गोटे स्मॉलर यूनिट ऑफ द कंपेयर विथ द टैलिक गोटे माने जो टैलिक सहित आम कंपेयर करबा एटा गोटे स्मॉलर यूनिट, एटा केवल जस्ट गोटे एक्सटेंशन ऑफ द कौन ब्लॉक गोटे एक्सटेंशन एटा होची। तो मैक्सिमम स्टेट किसी स्टेट रे याको टैलिक रे गोटे कोएक्सटेंसिव भाव रे ग्रहण करा जाए ता जुरिस्डिक्शन सेतिकी। देन मेंबरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत समिति। This intermediate tier of the Panchayat Raj system is generally comprised by the following members. First, 6 to 10 members of Panchayat Samiti are directly elected by the peoples of constituency falling within the area of the Panchayat Samiti. In fact, one member of the Panchayat Samiti is elected for 50,000 in fact, one member of Panchayat Samiti is elected for the population unit of the 15,000. तो 6 to 10 मेंबर पंचायत समिति डायरेक्टली भोटर मानक द्वारा इलेक्ट हुअंती जो कॉन्स्टिट्युएंसी माने पंचायत राज एरिया रे से पंचायत समिति एरिया रे आसुची से सब कॉन्स्टिट्युएंसी इलेक्ट हुअंती किंतु प्रति 15,000 रे माने जणे मेंबर इलेक्ट हुअंती प्रति 15,000 लोकन पई इलेक्ट हुअंती। सेकेंडली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सरपंचेस ऑफ द पंचायत, सरपंच पंचायत मानकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थांती। थर्ड, लोकल एमएलए एंड एमएलसीएस with or without the right of vote,
आम जो एमएल अच्छा माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलसीएस आमर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो जो स्टेट अच्छे से मेंबर माने भी नॉमिनल मेंबर आउ जोड़ाक सब इलेक्टेड मेंबर समस्ते तार मेंबर था। नेक्स्ट पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग वोमेन SC ST whose seats are reserved आमर वोमेन मान था SC ST मान था जहाँ सीट रिजर्व होगी थाए से माने भी था। नेक्स्ट इन एवरी पंचायत समिति सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC वोमेन एंड OBC not more than one third of all the seats that stand reserved for the SC are reserved for the women belonging to SC. 1/3 seats out of the total directly elected seat of the Panchayat Samiti stand reserved for the women. तो सब पंचायत समिति रे SC ST आमर सॉरी SC वोमेन आ OBC मान सीट रिजर्व थाए आते SC मान जिते सीट रिजर्व थाए 1/3 सीट थाए SC वोमेन मान ठीक से भाई आमर पंचायत समिति रे जो इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड सीट थाए से भी 1/3 सीट रिजर्व थाए क्या ना वोमेन मान। देन टेन्योर ऑफ पंचायत समिति The tenure of Panchayat Samiti is 5 years in all the state. Then meeting. The Panchayat Samiti normally meet at least 6 times in a year for transaction of its business and not more than 2 months are to be allowed. The meeting of Panchayat Samiti is either ordinary or special. Any business can be transacted in ordinary meeting unless required by this act or rule may thereunder to be transacted by the special meeting. The date of every meeting is fixed by the chairman and his absence. In his absence, it is fixed by the vice chairman. तो पंचायत समिति मीटिंग वर्ष को 6 थर हुए आ 2टी मीटिंग भितर 2 मासर गैप 2 मास रु अधिक गैप रही पारिबनी। तो पंचायत समिति स्पेशल मीटिंग भी हुए ऑर्डिनरी मीटिंग भी हुए आ नॉर्मली पंचायत समिति तार बिजनेस सब कार्यक्रम माने आमर ऑर्डिनरी मीटिंग रे संपादन करे जो दरकार पड़े अकॉर्डिंग टू लॉ से माने स्पेशल मीटिंग भी डका जाए। पंचायत समिति मीटिंग रे अध्यक्ष करती चेयरमैन और चेयरमैन मीटिंग रे डेट फिक्स करती आउ आब्सेंस रे वाइस चेयरमैन भी पंचायत समिति मीटिंग रे डेट फिक्स करती आउ माने मेजॉरिटी मेंबर को उपस्थित मीटिंग हुए और 8 जन भी हुए। 5 चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति। At its very first meeting, the Panchayat Samiti elect the chairman and vice chairman. However, 1/3 seats of the chairman seats of the Panchayat Samiti are stand reserved for the women members. Likewise, some of the offices are stand reserved for the SC ST. The term of chairman is equal to the term of the Panchayat Samiti. Further, the member of Panchayat Samiti can remove the chairman by passing the resolution by the support of 2/3 majority. This can be done by the special meeting of the Panchayat Samiti. But removal resolution can be passed only after 2 years of expiry of his term. In case such resolution is rejected by the member of Panchayat Samiti, a fresh removal resolution can be passed after 2 years. तो पंचायत समिति फास्ट मीटिंग पर इलेक्शन फास्ट मीटिंग पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बछा जाए
ଯେତେକ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ 1/3 ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଥାଏ ଆମର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଅଫିସ୍ ମାନେ କିଛି ସିଟ୍ ବି ଆମର କାହା ପାଇଁ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଟେନ୍ୟୁର ଯେତିକି ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁର ବି ସେତିକି। ପୁଣି ଯଦି ମେମ୍ବର ମାନେ ଚାହିଁବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ 2/3 ମେଜରିଟି ଭୋଟ୍ରେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନକେସ୍ ସେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆମର ପାସ୍ ନ ହେଇପାରିଲା ବା ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ନ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବା 1/3 ମେଜରିଟି ନହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣି ହେବନି। ଆଉ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ସେଇ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଜଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବା ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର ରିମୁଭାଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ପାସ୍ ନହେଲା ବା 2/3 ମେଜରିଟି ଭୋଟ୍ ତାକୁ ପାସ୍ ନ କଲେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିହେବ ନାହିଁ। Then 6 quorum. For the transaction of business of Panchayat Samiti, quorum has been fixed as the majority of member. Then the Panchayat Samiti in Odisha. In Odisha, the Panchayat Samiti Act 1959 came into operation in 23 January 1959. Subsequently, it underwent several amendments like 1961, 1968, 1994, 1995 and 2003. The Panchayat Samiti in Odisha is organized in block level. Each district is divided into some block, and for one block, one Panchayat Samiti is formed. Each block is declared as the Samiti area or the area of the Samiti. The state government is delimit the block area. By doing it, it can exclude the Gram Panchayat area from the block in which it is fall. Like other states, the Panchayat Samiti of Odisha also included both the elected and ex officio member from each constituency falling within the block. The people or the voter elect one representatives who represent them in the Panchayat Samiti. All the Sarpanch of the Gram Panchayat fall within the Panchayat Samiti are the ex officio member of the Panchayat Samiti. The MLA and MP which fall within the area Panchayat Samiti wholly or partially also the member of the Panchayat Samiti. The member of Panchayat Samiti elect one of their member as the chairman and one of their member as the vice chairman. Section 15 of the Panchayat Samiti Act declares that the executive head of the Panchayat Samiti is the chairman and the block developmental officer or BDO is the executive officer of the Panchayat Samiti. The BDO is appointed by the government of Odisha and in some case ओडिशा रे पंचायत समिति आरंभ होइतला 23 जनवरी 1959 रे तापर तर अमेंडमेंट होइतला जेमति 1961 1968 1994 1998 और 2003 रे तर अमेंडमेंट सब होइतला ओडिशा रे पंचायत समिति ब्लॉक लेवल ले अछि आ प्रति डिस्ट्रिक्ट किछि ब्लॉक रे डिवाइड हेछि आ प्रति ब्लॉक रे गोटे गोटे पंचायत समिति अछि तो
तो स्टेट गवर्नमेंट ब्लॉक एरिया गोटे माने तार ब्लॉक गोटे एरिया फिक्स करचंती जोटा कि माने ग्राम पंचायत एरिया टू एक्सक्लूड बा ग्राम पंचायत एरिया ब्लॉक एरिया रे माने पंचायत समिति एरिया रे जाउनी ब्लॉक एरिया रे जाउनी ग्राम पंचायत एरिया अलगा ब्लॉक एरिया अलगा। इंडिया रो अन्य स्टेट भली आम ओडिशा भी पंचायत समिति रे बहुत इलेक्टेड मेंबर अछंती आ एक्स ऑफिशियल मेंबर भी अछंती। आमर लोक माने बा गोटे ब्लॉक रे जते कन्स्टिट्युएंसी थाए से सब कन्स्टिट्युएंसी लोक माने तांकर माने जनकू रिप्रेजेंटेटिव भाव रे पठाते पंचायत समिति को। ता व्यतीत सबू ग्राम पंचायत सरपंच होचंती तार एक्स ऑफिशियल मेंबर। ता व्यतीत जते एमएलए एमपी थांती माने से जो कन्स्टिट्युएंसी रे पार्शियली हो बा होली हो समस्ते भी पंचायत समिति रे मेंबर। आउ अलग स्टेट भली माने फास्ट मीटिंग पंचायत समिति फास्ट मीटिंग रे जन को चेयरमैन आ जन को वाइस चेयरमैन हिसाब रे पछा जाए। तो चेयरमैन होचंती द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द पंचायत समिति अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 ऑफ द पंचायत समिति एक्ट। चेयरमैन इज द विल बी द executive authority of the panchayat samiti and the BDO block developmental officer is the executive officer of the panchayat samiti। BDO को state government appointment दियंती। next power and functions of panchayat samiti। Odisha Panchayat Samiti Act lays down the power and function of Panchayat Samiti. This lays down planning, execution and supervision of developmental program in the Samiti area, execution of community development projects, management of primary education, management of such trust and institution which stand interested by the state government, supervision of law related to the vaccination and the registration of birth and death, borrowing of the funds and the granting of the loans, supervision of the gram panchayat of the samiti area and such other function which may be assigned to the panchayat samiti by the government of Odisha. The panchayat samiti perform all its function with the supervision of the chairman by the help of the BDO. The chairman convenes and conduct the meeting of panchayat samiti and has the power to supervise and inspect all the function done by the panchayat samiti. Further, the chairman can assign any function to the vice chairman. In the absence of the chairman, the vice chairman acts as the chairman of the panchayat samiti. तो ओडिशा पंचायत समिति एक्ट पंचायत समिति कार्यकलाप गुड़ाक कौन कौन से कर ता विषय स्थिर कर गोटे डिटेल इनफॉरमेशन देछि। तो से गुड़ाक हूँ कौन आमर समिति एरिया प्लान माने डेवलपमेंटल प्रोग्राम प्लानिंग कर एग्जीक्यूशन कर ठीक से कर सुपरविजन कर कि नहीं ठीक से पड़ी आमर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी माने एग्जीक्यूशन कर माने परिचालन कर प्राइमरी एजुकेशन मैनेजमेंट कर सेमिति एरिया थिबा सब ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को भी से सुपरविजन कर जोटा सब एरिया रे बाय द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तैयारी सेमिति जो जो माने आम टीका वैक्सीनेशन जो लॉ अच्छी से सब सुपरवाइज कर जो बर्थ डेट सर्टिफिकेट इश्यू कर रजिस्ट्रेशन कर डेवलपमेंट फंड रेज कर लोन भी माने ग्रांट कर लोक मानू ग्राम पंचायत कार्यकलाप को भी से सुपरवाइज कर या व्यतीत अन्य सब फंक्शन जहाँ स्टेट गवर्नमेंट पंचायत समिति को देवे से सब काम भी से कर।
तो पंचायत समिति तार सब फंक्शन माने चेयरमैन को सुपरविजन रे करंती बाय द हेल्प ऑफ वीडियो हेल्प रे करंती। पंचायत समिति मीटिंग गुडी को सब चेयरमैन डाकती आ कंडक्ट भी करती। आउ पंचायत समिति जो जहाँ भी सब काम हुए ताकू से चेयरमैन सुपरवाइज करती आ इंस्पेक्ट भी करती। और चेयरमैन चाहिए वाइस चेयरमैन को भी किसी काम दे पारती। आउ चेयरमैन को आब्सेंस रे वाइस चेयरमैन को काम तुलांती। The panchayat committees which are falling within a district can jointly undertake any work for the which is deemed essential for the common good for more than one panchayat samiti. However, this can be done with the prior permission of the Odisha government.